प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਗਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ मौजूदा सरकार की देख रेख हेठा। जी आशा नहीं जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी आई नो वेलकम एंड खुशामदीद। वैसे दीदी आपको पता है कि जब कोई इस तरह की खबर सामने आती है तो वी डू शेयर दैट विद आवर लिसनर्स। एडिटर द न्यू वेस्टमिंस्टर टाइम्स जो कैपिटल ऑफ बीसी न्यूज़ एंड ओपिनियन शेयर करते, उनके एडिटर ने एक बहुत ही आई शुड से गंभीर या वेरी इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है वो तैयार की है, जो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। और इन्होंने कहा है बीसीज हार्म रिडक्शन ग्रेवी ट्रेन, जिसके बारे में कई सवाल उठे। डिड बीसी टैक्स पेयर्स पे प्रोफेशनल एक्टिविस्ट टेंस ऑफ मिलियंस to evangelize decriminalization and preach the harm reduction gospel? Jawab aaya yes. Did BC taxpayers pay hundreds of thousands to fund propaganda in defense of drug dealers? Jawab aaya yes. Are huge numbers of new treatment beds popping up across the province? कहते no. Should there be an investigation? कहते yes. This article looks into many of the sordid details of profligate spending by BC Ministry of Mental Health and Addictions and other health-related ministries, who doled out obscene amounts of cash to dozens of NDP cheerleaders in the non-profit sector. गौर करना, cheerleaders in the non-profit sector. Shocking numbers है. The scope of the NDP's safe cash supply for hard drugs activists is staggering. Let's start with the high-rolling Canadian Mental Health Association BC division. According to CMHA, BC's audited financial statements, the non-profit's cash skyrocketed from $20+ million at their March 31st, 2022 year end to $99 million at March 31st of 2024. That's nearly a 5-fold increase in 2 years. Judy Darcy, former BC NDP MLA for New Westminster, elected in 2017, BC's first Minister for Mental Health and Addictions, the MMHA, joined CMHA, BC's board in September of 2021. Between 2021 and 2024, CMHA, BC's annual grant revenue really took off, jumping 260% from $13.8 million in 2021 to $35.9 million in 2024. Total taxpayer-funded grant revenue over the 4 years was $87 million. Plus, the now defunct MMHA was by far the largest contributor to the CMHA BC over those 4 years, giving the organization $33.9 million, accounting for 38.7% of total grant revenue, including a whopping $18 million in 2024. Over the same 4-year period, $19.9 million came from the Provincial Health Services Authority and $24.5 million from the Ministry of Child and Family Development. Sheila Malcolmson,
replaced Darcy as head of the MMHA when Darcy retired in 2020. Malcolmson was replaced as MMHA head in 2022 by another New Westminster MLA, Jennifer Whiteside. In the 4 years up to March 31st of 2024, CMHA BC spent $37.8 million on wages and benefits, climbing 78% from $7.25 million in 2021 to $12.9 million in 2024. High-paid staff positions mushroomed with the surging cash inflows. According to CRA charity records, CMHA BC staff earning $120,000 to $159,999 per year jumped from 1 in 2021 to 9 in 2024. One staff member earned between $200,000 and $249,999 in 2024. CMHA paid BC NDP cheer squad. It perhaps unsurprising that the recipient of such massive government largesse would be inclined to lavish praise on their prime donor. The CMHA's BC's news release read like they were penned by BC NDP campaign staff. For example, a January 20th, 2025 CMHA BC news release about more substance use treatment is a word-for-word cut and paste for an NDP government news release of the same date. Same thing for a BC NDP July 15, 2024 NDP government media release from Powell River about Sunshine Coast Treatment Services. The CMHA BC issued an identical media release on the same day, including the same photo op for the Minister of Mental Health and Addictions. About those new recovery beds, it's not what you think. A note in CMHA's BC's March 31st, 2023 financial statement reads, subsequent to the year end, the Society received from the Ministry of Mental Health and Addiction an amount of $73 million in grant funding for the expansion of the substance use treatment and recovery beds program over the next 4 years, fiscal 2024 to 2027. The timing and details of the beds program are murky. According to a recent Ministry of Health news release, the province is now funding 248 treatment beds through CMHA. The words now funding are not to be confused with actual new beds coming into existence. Here's what our investigation found about the CMHA BC's beds program. The beds are not new. The beds are not new. No hammers are swinging at construction sites. According to the CMHA, BC's grant funding application guidelines, construction and renovation expenses are specifically excluded. The program does not add beds. It provides funding for the beds that already exist, but might be funded by non-government means. It's not clear if the funding would cover beds that are already occupied or if only vacant beds qualify. What appears to be going on is what is called cannibalizing in the business world. Let's say a company comes out with a new version of a product and the old product remains for sale in the market unless there is a flood of new buyers for the new product. The only way for the new entry to succeed is to eat into the sales of the older product. Let's say there is a set stock of treatment beds in BC. Since no new beds are being created under the beds program, the only way to add beds is to eat into the existing stock of beds. Only
low barrier beds qualify for funding. No abstinence based facility will get any BC NDP money through CMHA. BC recovering addicts looking for places to get away from the drugs or alcohol have no option under the NDP's harm reduction regime. The CMHA BC will likely not be able to meet its bed funding targets. According to the above financial statement note, $73 million CMHA BC grant covers a 4-year period that equates to CMHA BC spending $18.3 million per year on beds. Under the Society's deferred revenue recognition policy, the financial statements record as revenue only what has been earned by fulfilling the requirements of a grant. In the case of the beds program, the CMHA BC received $73 million from the MMHA in fiscal 2024, but only earned $7 million, leaving deferred beds restricted revenue of 71, which includes more beds cash from an earlier period. In other words, CMHA BC managed to dole out only $7.3 million last year, a mere tenth of the taxpayer money they have been given. Another spending bottleneck is the CMHA's BC's onerous treatment bed grant application process. Applications are required to prove their adherence to the full range of woke dogmas, such as proving compliance with the health equity, anti-racism, and embedding trauma-informed and gender-responsive practices in their work. When it comes to the overdose crisis tax dollar bonanza, the CMHA BC is at the top of the food chain. But to get a glimpse into more bizarre money spending insanity, one must look at one of the CMHA BC's offspring, the generic sounding Community Action Initiative. Community Action Initiative, the activist ATM, spun out of CMHA BC a few years ago. The CAI became front for handling out tens of millions of dollars of safe supply advocacy and harm reduction non-profits, some of which had the express aim of legitimizing illicit drug dealers. The now notorious Drug Users Liberation Front Society, DULF, got $120,000 from CAI in 2024, presumably before the organization was charged with criminal drug trafficking. The coalition of peers dismantling the drug war was awarded $180,000 by CAI in 2024. This group's express aims are to defund all police services, including the RCMP and prosecutors, to repeal the Controlled Drugs and Substance Act, and to release everyone imprisoned under the CDSA. In a 28-page report on their website, the tax dollar-funded coalition paints a heroic picture of drug dealers who keep their communities safe. Drug dealers are actually keeping their communities safer by keeping drugs in circulation that have a somewhat predictable content and that are cut in a way that ensures client safety. This is just the first of many ways that dealers keep their communities safe. Ultimately, the coalition of peers remains allied with those who sell drugs in an honorable, ethical, and safe way, and sees the role of drug dealers as integral against the racist and imperialistic war on drugs. Although the BC NDP argues publicly that safe supply
cuts evil dealers out of the supply chain, the funding through CAI or DULF and CPDDW suggests a more radical, stealth, anti-police orientation to their policy direction. The seemingly less radical Mountainside Harm Reduction Society awarded $597,000 by CAI in 2024 also seems to think drug dealers are doing good work. In 2023 interview with the Chilliwack Progress, Mountainside head Tanis Ollenberger complained that RCMP had arrested a drug dealer that she described as an ethical substance use navigator, giving drug dealers an air of nobility. Oldenberger said they are sick of their phone not ringing because all of their contracts are dead. CAI hooks up CMHABC with even more cash. A highly suspicious disclosure in CAI's March 31st, 2024 audited financials is that CAI had recently discontinued paying CMHABC massive physical agent fees, warranting a special note in the statement. During the year, the society incurred physical agent cost of $100,000, 2023, $100,000 to CMHABC Division, CMHABC at March 31st, 2024. There is a payable to CMHABC in the amount of $401,429, 2023 $740,988. Amounts paid and payable by CAI to CMHABC for the mysterious physical agent cost totally $1.3 million. The note goes on, subsequent to the year end, on July 28, 2024, the society formally concluded its legal relationship with CMHABC, which had previously provided financial, payroll, labor relations, and other human resources services to the society. $1.3 million for 2 years of basic accounting and HR services. The hefty fees were on top of a further $1.9 million in grants given to various CMHA entities in 2024 per the 2024 CAI financial statements. CAI's website lists 9 managers with glowing bios. Could these people not have done the work the CMHABC got $1.3 million to do? The CAI's personal cost for 2023-2024 totaled $2.5 million. If they weren't managing the money, what were they doing? The CAI blog post about CMHABC breakup did little to clarify the incestuous relationship between the two seemingly overlapping and redundant organizations. Over the next few months, CAI will be rolling out a new grant infrastructure, a new look and feel, and multiple new granting opportunities. CAI would like to thank CMHABC for its support and partnership over the last 14 years. Adding to the CAI's financial reporting problems is a troubling restatement disclosed in the 2024 financials. During the current year, it was identified that $24 million of grant contracts were signed prior to the March 31st, 2023 year end, but was not accrued as revenue in the 2023 fiscal year end. In other words, CAI's 2023 revenue numbers were off by about $25 million. Making matters worse, CAI's 2023 annual report is missing from their website. 2020-2021 is there, as is 2023 and 2024. There is a 1-year gap.
As expected, almost 100% of CAI's cash came from taxpayers. Total CAI revenues for 23 and 24 were $38 million, of which $36 million came from the BC Ministry of Mental Health and Addictions. What will CAI's 2024-2025 financials reveal? We'll have to wait and see. What does it all mean? The BC NDP's approach to the overdose crisis has been to enact radical policies and then aggressively promote those policies through massive advertising campaigns masquerading as advocacy and drug user services. The bloated MMHA bureaucracy of high-paid staff in Victoria paid other high-paid staff at CAI and CMHJBC to hand out money to dozens of non-profits, each with their own staff, phones, rent, insurance, accountants, lawyers, graphic designers, webmasters, protesters, and content creators. Like a pyramid scheme gone wrong, it's no wonder the MMHJ was shut down, but will anything change? Harm reduction and safe supply, which prioritize medicating addicts with more drugs, does not make sense to the average person. The idea that the key culprit in the 9-year overdose crisis is stigma does not ring true to average citizens. This is why the BC NDP spent tens of millions of taxpayers' dollars trying to make people believe they are right and everybody else is wrong. In power since 2017, the NDP has presided over a catastrophic rise in deaths and orders of magnitude more overdose that did not result in death. Myriad social problems such as street crime, homelessness, untreated mental illnesses, and untold human suffering have been normalized. The NDP shelled out tens of millions to flood the public square with activists preaching that hard drugs must be free, police are evil, and the blame for all social problems lies solely with those who do not use drugs. It's a toxic recipe for untold harm production, all on the taxpayers' dollars. Bravo. I actually salute this editor who brought everything out. This is something our community had to know. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CMHA ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣੀ CAI ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਵਡੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਨ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 260% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹਾਈ ਪੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਸ਼ਿਆਨਾ HR ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਿਹੜੇ 9 ਹਾਈ ਪੇਡ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ नशीले पदार्थों का करने वाले फायदा उठा रहे ने, वो लोग जिनके वजह से हमारे बच्चों के लाश जो है वो सड़कों पर मिल रहे हैं। बिल्कुल। आज स्ट्रीट्स पे जाकर देखो कितने ड्रग एडिक्ट्स लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें कोई होश कोई खबर नहीं होती। I got a chance to see somebody yesterday at emergency, और वो लड़की थी, फीमेल, she must have been about less than 30 years old, and उसका जो हाल थी दीदी, it was unbelievable, unbelievable. She was very pretty girl, but she could not get out of this drugs addictions. और फिर उनको शी वॉज अपनी इंडिजिनस लड़की थी, उसके जो इंडिजिनस हार्म रिडक्शन वाले लोग हैं उनका अपना एक ग्रुप है, वो लोग भी आए उसके पास, और व्हाट आई सॉ वाज शी वाज गिवन मोर ड्रग्स टू यूज। इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखे। और she is occupying one of the beds in the hospital. She is occupying many of our doctors and staffs. जब उनको हॉस्पिटल लाया गया रिहैब कराने के लिए, वहां पर उनको ड्रग्स सप्लाई कैसे किया जा रहा है? This is something which is very confusing to me. यहां हमारे टैक्स पेयर्स के इतने पैसे, इतने मेहनत काम करते हुए, बिजनेसेस काम करते हुए, टैक्स डॉलर्स जो हमारे सरकार बीसी को देते हैं, वो पैसे जब बाहर दिया जा रहा है इन चीज़ों को रोकने के लिए, इंस्टेड ऑफ इन चीज़ों को रोकने के लिए, ये पैसे कहाँ जाते हैं, किस चीज़ में जाते हैं? ये हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईबी को आंसर करना चाहिए। किस तरह से इन पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, घुमा फिरा के आके वो पैसे कैसे उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोगों को ये ग्रांट्स एंड फंड्स मिलता है। हाँ जी, ਅਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਂਟ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅਨਐਥੀਕਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। दीदी, जब जनता बोल के दस दी है, जब जनता आम पब्लिक बार बार बता रही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से टैक्स पेयर्स के पैसों की धज्जी उड़ा रही है, तो उस वक्त सरकार क्या बहरे हो जाते? उनको समझ नहीं आती, उनको पता नहीं चलता किस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड्स, ग्रांट्स, फंडिंग दिए जाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स लाकर इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि जाकर पिक्स के प्रोग्राम्स देखो, कितने लोग होते हैं प्रोग्राम्स में शामिल होने वाले, और वो लोग है कौन? कौन है वो लोग? घुमा फिरा के वही लोग सारे प्रोग्राम्स में क्यों बैठे रहते हैं?
दिस इज समथिंग हमारे बीसी सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमएलएज हैं, उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जनता चीख चीख कर बता रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिक्स के अंदर ये हो रहा, प्रोग्रेसिव इंटरकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज, जो हमारे अपने कौम के लिए ग्रांट्स एंड फंडिंग्स लिए जाते हैं, जो सीईओ से लेकर और जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी लोग वहां काम करते हैं, किसके पॉकेट के अंदर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। कौन यहां पर मिस यूज कर रहे हैं फंड्स, कौन इसका हिसाब किताब देंगे, ये बीसी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। बीसी सरकार पैसे दे देते हैं, उसके बाद उन पैसों का धज्जी कैसे उड़ाया जाता है कोई उसका खबर नहीं रखता। अभी आपको पता है, आप भी वहां थे पिछले पिक्स के एजीएम मीटिंग पे, सिर्फ उन लोगों को अंदर करके दरवाजा बंद। आम पब्लिक एजीएम मीटिंग में आ ही नहीं सकते, आम पब्लिक आके सवाल नहीं पूछ सकते। ये किस तरह के एजीएम मीटिंग पिक्स वालों ने हैंडल किया, और हमारे एक मिनिस्टर की बीबी भी वहां थी, शी वॉज देयर टू। किस तरह के ये मीटिंग हैंडल करते हैं प्रोग्रेसिव इंटरकल्चरल कम्युनिटी सर्विस, जिनके डायरेक्टर्स में बैठे होते हैं सस्पेंडेड रियल्टर्स, डायरेक्टर्स में बैठे होते हैं अल्कोहल से डूबे हुए, एक बार पिक्स से किक आउट किया हुआ एम्प्लॉइज, वो डायरेक्टर में बैठे हुए हैं। अगर इस तरह के डायरेक्टर्स है पिक्स के अंदर, तो हमारे जो टैक्स पेयर्स की जो ग्रांट्स एंड फंडिंग्स वाले पैसे, वो कैसे ये हिसाब किताब दे सकेंगे, कैसे दे सकेंगे? मुझे तो हैरानी है, मनजिंदर ग्रेवाल जो खालसा क्रेडिट यूनियन में मेरे ख्याल से काम करती है, खालसा क्रेडिट यूनियन में रहकर भी, बैंक में काम करते हुए भी हिसाब किताब पिक्स से क्यों नहीं मांग सकती? क्यों नहीं पूछ सकती पिक्स के अंदर हो क्या रहा है? लेविश क्रिसमस पार्टी के बिल्स कौन पे कर रहा है? जहां पर पिक्स के एक एम्प्लॉय की डेथ होती है, डेथ के बाद लोगों ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाए, पिक्स को नोटिस ऑफ क्लेम्स भेजा गया। कौन उसका जवाब दे रहा है? वकील के पैसे कौन पे कर रहा है? क्या ये सब कुछ हमारे टैक्स पेयर्स डॉलर से नहीं हो रहा? क्या जगरू ब्रार जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसकी बीवी वहां काम करती है, उसको नहीं पता कि ये सारे पैसे जो है, लॉयर के, वकील के बिल, लाविश क्रिसमस पार्टी में जो जाम छलकाए जाते हैं, वो कौन पे कर रहा है? मैं और आप, हमारे टैक्स पेयर्स के डॉलर्स। और ऐसे ही सोसाइटीज से इनको ग्रांट्स एंड फंडिंग्स दिए जाते हैं। उस वक्त ये लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? एक शराब का जो ग्लास है दीदी, वो $20 का मेरे ख्याल से आता, कहते, मुझे तो पता नहीं, पर लोग कहते $20। इट डिपेंड्स कि शराब कौन सा ले रहे हो, कुछ उससे ज्यादा के। अगर एक एक गिलास शराब का $20 पे किया जाता है बीसी के टैक्स पेयर्स डॉलर से, लानत हो ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। इससे बेहतर है तो हमें जरूरत ही नहीं है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे जितने लोग थे, क्यों नहीं सवाल किए? पार्टी बगैर शराब की भी तो होती है। बहुत सारे पार्टीज लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, कोई बात इंट्रोड्यूस करना है, कोई एडवर्टाइजिंग, कोई नेटवर्किंग करना है, उसके लिए आप पार्टीज कर सकते हो। लेकिन पार्टीज में शराब होना जरूरी है क्या? शराब होना जरूरी है हमारे बीसी के टैक्स पेयर्स डॉलर्स पर? चाहे उससे किसी एम्प्लॉय के जान क्यों नहीं चले जाए? हु इज गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? Who's gonna come and tell us कि non-profit organization PICS, जिसको बनाया गया था बड़े अच्छे सोच के साथ कि अपनी कम्युनिटी की एक तरक्की ऑर्गेनाइजेशन होगा,
इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कौन कर रहा है? हु इज रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? यह हमारे बीसी सरकार को पता है या नहीं? अपने सारे मिनिस्टर्स, अपने सारे एमएलएस को रीचेक किया जाए कि कौन है जो पिक्स के साथ मिले हुए हर एक स्कीम में पैसे बना रहे हैं। हु इज इट? जिसके बारे में पर्दाफाश करना जरूरी है। ऐसे नहीं मिनिस्टर्स के बीवियां वहां काम करे, 2-2, 3-3 रेज मिल जाते हैं उनको साल में। कहते जी जाकर देखो कितने कीमती कीमती टीवीज उनके घर में लगे हुए हैं, और वो टीवी जो है वो परचेस किस चीज के लिए किया गया था, ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। अब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं जी मीडिया आउटलेट रन कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया आउटलेट रन करने की क्या जरूरत पड़ गई? उस तरफ पैसे खर्चे करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मीडिया आउटलेट्स है नहीं मेनलैंड, लोअर मेनलैंड में, जिनको स्ट्रेट फंडिंग सरकार दे सकते हैं कि मीडिया कवरेज बेहतर तरीके से चलाओ, मीडिया बेहतर बनाकर चलाओ? क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाहिए? This is disgusting, Davy DB. You should be answering all this. Don't tell me that you don't know all this, because we told you the details. And it seems like you don't care. You don't want to listen to anybody. Why? Because you know people are actually bringing money from one corner, circulating to the other corner. And who actually gets that money? ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਟੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਅੱਡੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਠੋਂ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ। ईमानदारी नाल कमाए हुए पैसे का इस प्रकार दुरप्रयोग है ना, जिहड़ा आशा ना कुछ कुछ लोगों वालों ये दसदा कि मौजूदा सरकार अपने चहेतियां दे मोढे दे उत्ते हथ रखदी है। बिल्कुल इसे करके इलैक्शन दे टाइम दे उत्ते इहो जिहे लोग झंडियां चक के तुरदे आ और कहंदे आ कि साडी संस्था दीयां सारियां वोटां ने जिहड़ियां ओह तैनूं पैणगीਆਂ। ये रिश्वत नहीं, एक करप्शन नहीं, तो होर की है? शर्म होनी चाहिए है। और यही जी कारगुजारी के खिलाफ दे विच हर एक टैक्स पेयर नूं खड़े होना चाहिए, क्योंकि कमाई बड़ी सिर तोड़ अपना आप तोड़ के की जाती है। और यह जे मगरमच्छां दे जिहड़े लगे हुए ने ना गफ्फे, उन्होंने उत्ते कंट्रोल पाना जरूरी है। वैसे दोस्तों आप लोगों को जरूर ये बात बताना चाहती हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पिक्स के और भी बहुत सारे कारनामे हमारे सामने खुलकर आए। कुछ रीजंस के वजह से पिछले कुछ दिन टॉक शो से हम बाहर थे, वापस आ गए हैं, और ये सारे जो टॉपिक्स है वो डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से एक फॉर्मर एमपी एमएलए रह चुका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ब्रेन शामिल करके किस तरह से ये सारे जो काबुली पुलाव है वो बना रहे हैं। ये बारे में डिस्कशन हम जरूर करेंगे। तो याद रखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ये चालाक जो चालबाज, चाहे वो फॉर्मर एमएलए एमपी होवे या करंट एमएलए होवे, मिनिस्टर होवे या उनके स्पाउसेस होवे, किसके कहने पर इस तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के हरकत करते हैं जो शर्मनाक है। बहुत शर्म की बात है
कि हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बीसी टैक्स पेयर्स के डॉलर्स खा रहे हैं और हजम कर रहे हैं। हम दूसरों को बोलने के लिए बहुत जल्द शुरू हो जाते हैं, लेकिन अपने काम में, अपने कम्युनिटी में इस तरह के गंदे स्नेक्स मौजूद हैं जो इस तरह के काम करते हैं, बीसी टैक्स पेयर्स डॉलर्स पर ऐश करते हैं, शराब जाम छलकाते हैं, मैक्सिको जाकर नाइट स्पेंड करके आते हैं, और बहुत कुछ है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो आप तक जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीसी टैक्स पेयर्स के डॉलर्स है, ना कि इनके बाप दादे के जायदाद है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। Until next time, goodbye and be safe। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।